Welcome Edithi Girls Academy. Hello everyone, hope you are doing well. Today is going to be our first English lecture. So we will start with the history of English language. Why? Because when you start to learn about something, you should really know about the background or the history of that particular topic or language. So let's start with the history of English language. Okay. English is basically a West Germanic language of Indo-European language, and it is originally spoken by all the medieval England inhabitants. Okay. We can say that English is basically a member of Indo-European family of languages. बहुत सारे लोग कहते हैं कि language जो है English language is derived from Latin, Greek, and some of them consider that it is regarding from other languages, which is true, but it is a West Germanic language as well. According to linguistics, languages are categorized by its genetic relationship. This could be by common ancestors and features that distinguish it from other languages. And this relationship can be seen by two major things. The first, it should have proper grammar, and the second, it should have a syntax. What is the meaning of syntax here? If you are a linguistic student, you might probably know about this word syntax, and you will be very influenced by this word. Syntax means a group of words or arrangement of words and phrases to create a very well formed sentence in a language. Okay, another thing or another statement that we have is structure of sentences to computing it. ठीक है, जब आप वर्ड्स को या बहुत सारे वर्ड्स को मिला के एक जुमला बनाते हैं, उसको कैटेगराइज करने के बजाय आप उसको कंप्यूट करते हैं, इट इज़ कॉल्ड सिंटैक्स. ओके. It says that vocabulary of English has been influenced by Romance language like Latin, French and Spanish. Another thing is that बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ रोमांस लैंग्वेज एज वेल. वेल, हाउ? लेट मी टेल यू दिस हाउ. As I told you earlier, English is a West Germanic language, and it is also derived from other sort of languages as well. Like in the picture you can see that there is 26% of Germanic, 29% is French, 29% is Latin, 6 is Greek, and 6 are the other sort of languages. So German, French and Latin, 26, 29 and 29. It means it has 58% of Romance language criteria. So this is how it proves that English is also a Romance language. English sounds vocabulary also borrowed from non-Germanic languages, and it remains a Germanic language not only in its core but also in its sounds and structure. Means that fully English जो है वो German के sounds or structure and sound of English language is also borrowed from Germanic languages. The sound, the structure and the vocabulary is totally derived, or you can say that borrowed from Germanic language. Now we will move to the very important part, which is the periods of English language. As you can see that the table, which is Old English, Middle English, Early Modern English and Present Day English. Present Day English, we are very well aware of that language, which is our present day. जिस तरह से हम इंग्लिश को बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, क्रिएटिव राइटिंग में उसको यूज़ करते हैं, दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ऑल द प्रीवियस 3 stages of English language. So let's start with the Old English. I'll try to cover up all the parts or the periods of English language so that you can understand it very well. Okay, so we will start with the first, that is Old English, which was derived from German 3 tribes. First is Angles, Saxons and Jutes. इन तीनों ने डिफरेंट डायलेक्ट्स को मिक्स किया, जर्मैनिक डायलेक्ट्स को, और उसके बाद इन्होंने ओल्ड इंग्लिश को
डेवलप किया। ओल्ड इंग्लिश को उस टाइम पे एक इंग्लिश के वर्ड से जाना जाता था, प्रोनाउंस और स्पेल दोनों तरीके से उसको डिफरेंट तरीके से किया जाता था। ओल्ड इंग्लिश के जो वर्ड्स थे उस टाइम पे वो टोटली चेंज थे जैसे हम आज यूज़ करते हैं। हमारे आज के इंग्लिश के वर्ड्स, द वे वी राइट, द वे वी स्पीक, वी कम्युनिकेट, टोटली डिफरेंट है उस टाइम के लिहाज से। नेक्स्ट इज़ द मिडल इंग्लिश विच वॉज बाय अबाउट 1200, और ये बाय द टाइम जैसे जैसे टाइम गुजरता गया विद द डेवलपमेंट और विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें डेवलप होती रही। इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रोवाइज्ड हुई, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई, और उस टाइम पे मोस्टली जो डेवलपमेंट हुई थी और एडिशन हुई थी वो फ्रेंच वर्ड्स से इंग्लिश में हुई थी। बहुत सारे फ्रेंच के वर्ड्स जो थे वो इंग्लिश में एम्बेडेड हुए थे। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स एम्बेडेड इन द इंग्लिश वोकेबलरी आर वर्ड्स ऑफ पावर, जो यहाँ पे मेंशन भी हैं, सच एज क्राउन, कैसल, कोर्ट, पार्लियामेंट, आर्मी, मेंशन, गाउन, ब्यूटी, आर्ट, पोइट एंड रोमांस। ओके, इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश उस टाइम पे एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज थी बिकॉज वो फर्स्ट लैंग्वेज थी। उस टाइम पे उसके जितने वर्ड्स थे, जो उनकी ग्रामर थी, वो टोटली एक स्टैंडर्डाइज थी। बट विद द टाइम मिडिल इंग्लिश जब आने लगी और वो डेवलप हुई तो उसको सबसे ज़्यादा एक फ्रेगमेंटेड, एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज कंसिडर किया जाने लगा। उसका साउंड, स्ट्रक्चर, ग्रामेटिक सब कुछ थॉरली जो था वो इम्प्रोवाइज्ड हो गया था। इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जियोफरी चौसर की कैंटरबरी टेल, जो कि एक बहुत ही फेमस पोइट्री है। द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन दैट पर्टिकुलर पोएम इज़ वेरी अमेजिंग. It is a story about 30 people who went for a pilgrim by the 14th century in England. उस टाइम पे जियोफरी चौसर ने बहुत सारे वर्ड्स का सिलेक्शन किया था जो कि टोटली चेंज था, डिफरेंट था। एंड मिडिल इंग्लिश में जब भी एग्जाम्पल दी जाती हैं वो सबसे पहले जियोफरी चौसर की इसी बुक के बारे में दी जाती है। You can check that out book, and if you want to know more about this I can give you a review regarding this book. Okay, moving on to modern English, which has spread around the world since 17th century as a consequence of the worldwide influence of the British Empire and the United States of America. इस मॉडर्न इंग्लिश को दो नामों से जाना जाता था। द फर्स्ट वन द एज ऑफ शेक्सपियर और द एलिज़ाबेथन एरा। मॉडर्न इंग्लिश वॉज कंसिडर एज द एज ऑफ शेक्सपियर एंड द एलिज़ाबेथन एरा बिकॉज it was the height of English Renaissance and the flowering of English poetry, music and literature. उससे पहले जितने भी जो हमने ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश के बारे में पढ़ा था, उस टाइम की जो पोइट्री थी वो बाउंडेड थी, वो क्लासिकल पोइट्री थी, बाउंडेड थी। लेकिन विद द अराइवल ऑफ शेक्सपियर एंड मैनी अदर composed or playwrights, they totally broke free of England's past style of plays and theatre. So it was considered as the age of Shakespeare and the Elizabethan era. At that time, Bible and some other valuable manuscripts were also printed, and Shakespeare also invented over 1700 of English common words such as dawn, moonbeam, elbow, green, and eyed. You can check that out, his poetry or his playwright, where he used most commonly these words. At the time of Renaissance, many words from Greek and Latin entered in English as well. So that's why the period modern English culture history is sometimes referred as the age of Shakespeare or Elizabethan era. I hope you all understand this lecture because as much as I know, I describe it very briefly. In the next video, we will talk about the old and modern English words, their difference in sounds and writing. So till then, stay tuned and do subscribe.